All right, good afternoon, students. So in the last class, we have discussed with Article 12 and Article 13, right? So in today's class, we are going to discuss with the next article, and that is Article 14. Article 14. Very, very important article of the Indian Constitution in part 3, right? Now, what is Article 14? Well, while discussing about classification of fundamental rights, I've told you that one of the ways of classification of fundamental rights is to classify the fundamental rights on the basis of their subject matter or content. And on that basis, we have classified fundamental rights into 6 categories, right? And the first category was right to equality. Yes, good afternoon. Don't be late. Darwaza band karo. Right to equality, and right to equality is from articles 14 to Article 18, right? So we are beginning with right to equality, which begins with Article 14 and ends with Article 18. Got it? The subject matter of today's class? Okay, fine. So let us discuss Article 14. What is Article 14? Well, Article 14, it is titled as equality. Equality before law. It is of extreme importance, because without Article 14 or without equality before law, the democracy cannot exist, right? So Article 14, we can say that it is the foundation of constitutional democracy. It is the base upon which the constitutional democracy is based. Article 14, equality before law. Now what Article 14 states? Take a write down. Article 14 states that the state shall not deny to any person equality before law, or the equality or the equal protection of the laws, plural, within the territory of India. This is what Article 13 is all about. Okay. Article 14, it is titled as equality before law. It states that the state shall not deny to any person equality before law or the equal protection of the laws within the territory of India. Which article of the Indian Constitution specifies the territory of India? Article 1. Okay. Now if you read this article very closely, there are certain words which are very, very important, right? So first is shall, right? And who shall? The state shall not, means state cannot. See, the word shall, may, can, these are of very important, these are of extreme significance. So wherever you read any articles, you need to focus on these words. You have to read between the lines, okay? So shall means it is constitutionally binding on the state. It is not voluntary. So state, come what may,
State shall not what? Deny to whom? Any person. Now, any person means that person can be a citizen or that person can be a foreigner or non-citizen. So, it means that the protection under Article 14, it is available to both citizens and non-citizens, citizens and foreigners, right? Now, state shall not deny to any person equality before law or the equal protection of the laws within the territory of India. Okay, so it is available to all persons, available to all persons who reside within the territory of India. Okay, I told you there are certain fundamental rights which are available to only citizens, exclusively to citizens, and there are some fundamental rights which are available to both citizens and non-citizens. Article 14 is available to both citizens and foreigners. Okay. Now here the term person also includes legal entities. Person does not necessarily should be an individual human being or individual being. It can be any legal entity like corporations, like companies, like registered societies, so on and so forth. Okay, so the word person is broadly defined. So person includes not only individuals but also legal entities like companies, corporations, registered societies, so on and so forth. Got it? Now, Article 14 talks about two things. One is equality before law, and second is equal protection of the laws. These are two things guaranteed under Article 14. Now, at the outset, आपको ये लग सकता है कि ये दोनों सेम है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज ये सेम है, ऐसा आपको लग सकता है, बट ऐसा है नहीं. ठीक है? सो these two phrases, equality before law and equal protection of the laws, they cannot be used interchangeably. ठीक है? We need to distinguish between the meaning of equality before law and equal protection of the laws. ये दोनों सेम नहीं है. ठीक है? So now what we will do, we will understand the meaning of both these phrases. Equality before law क्या होता है और equal protection of laws क्या होता है. ठीक है? Got it? चलो. So now first is equality before law. See, the moment you come across the term equality, it means absence of discrimination or it means absence of privileges. Okay? Now, before we understand what is equality before law, we need to understand what equality before law does not mean. पहले समझते कि equality before law का मतलब क्या नहीं है. ठीक है? Now, equality before law does not mean that all the laws should be applicable uniformly. ऐसा नहीं है. ठीक है? Not all the laws should be applicable uniformly to all the persons. ऐसा नहीं है. ठीक है? Right? I will discuss it in detail when I discuss equal protection of law. Now, what is equality before law? Equality before law means following things. Okay, number one, I told you whenever there is term equality, it means absence of privileges. Equality and privileges, they are against each other. They are antithetical to each other. हाँ, equality सबको equally treat करना पहला, और दूसरा privileges. कुछ लोगों, privileges are available only to few, whereas equality is available to all, right? So equality is antithetical to privileges. Okay? For example, during feudal society, there was no equality. Why? Because feudal society was based on feudal privileges, wherein certain rights
were exclusively available to few people, that is feudal lords or priestly class, so on and so forth. ठीक है, right? So equality and privileges, they are opposed to each other. So equality before law means absence of any privileges, absence of any privileges, absence of any privileges in favor of anyone or any individuals, absence of any privileges in favor of anyone. For example, if you in medieval times, right to vote was a privilege to be enjoyed only by few, those who had particular property, those who owned a minimum property, or those who had educational qualifications, so on and so forth, right? Okay, so that was based on privileges, right? For example, during during the just before the French Revolution, the French society was divided into 3 estates, right? First estate was clergy, right? It included priestly class. Okay, second estate was that of nobility, okay, and third was commoners. Okay, now the right to vote was an exclusive privilege, or right to participate in political life or political affairs was exclusive privilege of first 2 estates, that is clergy and the nobility. Whereas duty to pay taxes was the duty only of third estate, that is commoners. It included peasants, tenants, petty shopkeepers, so on and so forth. ठीक है, right? तो rights और duties equally applicable नहीं थे. ठीक है, तो क्या आप कह सकते हो कि in feudal society there was equality before law? No, there was no equality before law. Why? Because equality before law means, first condition, absence of any special privileges in favor of any person. ठीक है, absence of any special privileges. Got it? ठीक है. Second, equal subjection of all persons to the ordinary laws, administered by who? Administers the law? Who administered the law? Administered by courts, administered by ordinary courts. Equal subjection of all persons to the ordinary laws administered by ordinary courts. There should not be special courts to prosecute some people and other courts to prosecute other people. No. ठीक है, you must have heard about Ilbert Bill controversy, ठीक है, wherein Europeans were before that Europeans were tried by European judges. Indian judges were not allowed to try the Europeans. So there was a kind of, in theory there was equality before law during colonial rule, British colonial rule, but in practice it was not. ठीक है, कोर्ट सेम है लेकिन different people prosecuted different. There was a classification on the basis of race or on the basis of nationality, right? Got it? ठीक है. So equal subjection of all the persons to the ordinary laws administered by the ordinary courts. सब लोग जो है वो इक्वल लॉस के सामने, सब लोग जो है वो ऑर्डिनरी लॉस के थ्रू गवर्न होंगे. ठीक है, राइट, फाइन. नाउ थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट. No person is above the law.
no person is over and above the law. No person is over and above the law. So high, low, rich, poor, official, commoner, or government official, government servant, or common person. All the persons, they are subject to the administration of the laws. They are governed by the laws. Meaning no person whatsoever is over and above the law. Meaning every person, high or low, rich or poor, man or women, government official or non-government official, so on and so forth, right? Rural person, urban person. Okay? So every person is governed by the same sets of laws, and every person is under the sovereignty of the law. Meaning right from the prime minister to the ordinary peasant or a poor person, everyone is servant of the law. Law is master of all. There is one phrase which says that, be you ever so high, law is above you. Law is above all of us. Even if you are a prime minister, you cannot go against the law. That is why आपने बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा ना, ये एक सेंटेंस या एक पर्टिकुलर डायलॉग कि कानून को हाथ में मत लो, है ना? मत, इसका मतलब क्यों कानून को हाथ नहीं लेना होता? क्यों कानून? यू कैनॉट बी अ जज, जूरी एंड एग्जीक्यूशनर. कभी कभी हम लोग क्या है ना, हमारे में वो कॉन्शियसनेस नहीं होता है. So the moment we come across this news that of a gang rape of a child by a person, we immediately get angry and we say that that person should be hanged publicly. But that is against the criminal justice administration. That is against the law. There is a system in place. There is some system in place wherein it is only the judiciary which can punish the violator of the law. Right? So you cannot be law unto yourself. You cannot become law and you punish the others. So lynching, right? Lynching is also against the principle of say rule of law, right? Or the principle of sovereignty of the law. Okay, right? So no person is over and above the law. It means that what is supreme? Law is supreme. कॉन्टेक्स्ट में जवाब दिया करो ना. अभी हम लोग कौन सा कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करें? लॉ का डिस्कस करें कॉन्टेक्स्ट. ठीक है? सो नो पर्सन इज ओवर एंड अबाउट द लॉ. इट मीन्स दैट इट इज द लॉ दैट इज सुप्रीम एंड नॉट इंडिविजुअल. कितना भी कोई पावरफुल हो, ही इज गवर्न्ड बाय द लॉज. अगर लॉ से वो गवर्न नहीं है तो व्हाट विल हैपन? दैट पर्सन माइट यूज हिज और हर पावर आर्बिट्ररी एंड whimsical manner, right? And there will be injustice in the society, particularly against poor and vulnerable section of society. Okay? So the third important element of equality before law, it means no person is over and above the law. Okay? Be you ever so high, law is above you. Okay? Aristotle once said that, law is master and all of us are servants of the master. Law is master, meaning law is supreme. All of us are governed by the law and not by any whims or fancies of any individual person, even if that person is very powerful. Okay? Right? And there was one Roman lawgiver, Cicero. He once said that all of us are
servants of the law in order to be free. So law is an instrument of our freedom. You cannot say that law restricts our freedom. Yes, somewhere down the line laws restricts your freedom, but law also guarantees your freedom as well. Take the example of traffic rules. Okay? Yes, Adarsh. Hello. Hello, Amir. ट्रैफिक रूल्स है, तो ट्रैफिक रूल्स में क्या है? यू कैन नॉट ड्राइव योर कार बियॉन्ड अ पर्टिकुलर स्पीड लिमिट. सो दिस ट्रैफिक रूल लिमिट्स योर freedom to drive car at whatever speed you want. So in a way it is restrictive, but at the same time it also protects your freedom. It protects you from accident, from bodily harm and injury, and from death as well, possible death as well. Okay? So that's why Cicero said that all of us are servants of the law. Why? In order to be free. अगर law नहीं होता तो क्या होता? What is law? Law is a set of rules and principles. Law is a set of rules and principles. Why do we need law? The law is needed to ensure order, peace, stability and security in the society. Imagine your life without any laws. Imagine driving your car without any traffic rule. What will happen? There will be a traffic jam. There will be collisions. There will be accidents. And is this situation beneficial for everyone? No, it is beneficial to none. Nobody will be able to go to their desired destination if there are no rules or regulations. Okay? So law basically is a set of rules and regulations and principles, okay, which regulate or control human behavior. Without laws, what will happen? Without laws, there will be chaos, disorder and anarchy in the society. जंगल राज जो कहते हैं हम, जंगल राज मतलब क्या है? लॉलेसनेस. लॉलेसनेस मतलब जंगल राज. तो क्या आप लॉलेसनेस में रहना चाहोगे? नहीं. ठीक है? सो दैट इज व्हाई देयर नो पर्सन इज ओवर एंड अबाउ द लॉ. Law is supreme. Every person, high or low, rich or poor, man or woman, official or non-official, is subject to the law. Right? So that is what is meaning of the phrase equality before law. Equality before law means number one, absence of any special privileges in favor of any person. Okay? Then second is equal subjection of all persons to the ordinary laws administered by ordinary courts. ठीक है? मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ लॉज कुछ लोगों के लिए है, सेपरेट लोगों के लिए है, और कुछ लॉज कुछ अलग के लिए. ऐसा नहीं होना चाहिए. इक्वलिटी बिफोर लॉ के अंडर बोल रहा हूं. आई एम नॉट डिस्कसिंग इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. ठीक है? राइट. एंड थर्ड इज नो पर्सन इज ओवर एंड अबाउ द लॉ. गॉट इट? ठीक है? सो फ्रॉम दिस यू विल रियलाइज दैट इक्वलिटी बिफोर लॉ, from this definition, do you find equality before law as a positive concept or a negative concept? It is a negative concept. Equality before law is somewhat negative concept. निगेटिव मतलब निगेटिव जो हम डे टू डे लाइफ में जो निगेटिव यूज करते हैं वो नहीं. निगेटिव मीन्स द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ हैज नेगेटिव कॉनोटेशन. व्हाई नेगेटिव? बिकॉज इट पुट्स लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ द स्टेट. राइट? सो इन दैट सेंस इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट, समवॉट नेगेटिव कॉन्सेप्ट. नेगेटिव मतलब खराब नहीं. इट मीन्स दैट लॉ is used to limit the power and authority of the government. So in that sense, law prevents the government from doing certain things, and that is why it is somewhat negative concept. Okay? For example, we say that fundamental rights are negative in nature because they prevent the state from doing certain things, whereas directive principles of state policy, they are positive in nature. Why? Because they want a state to do something, some positive things.
like provision of certain social services, health, education, sanitation, drinking water supply, so on and so forth. So fundamental rights are negative in nature, whereas directive principles of state policy are positive in nature. Similarly, equality before law is a negative concept. It puts certain limitations on the powers of the state. Okay? State cannot treat people differently according to equality before law. समझ में आए? ठीक है? Law does not discriminate. ठीक है? आपने कभी देखा होगा जब आपने कोई कोर्ट प्रोसीडिंग्स या मूवी में भी आपने देखा होगा, एक न्याय की मूर्ति होगी, है ना, द स्टैचू ऑफ जस्टिस. तो उसके आंखों पे एक काली पट्टी लगी हुई रहती है. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट दोज हु एडजुडिकेट लॉज, जजेस, शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पीपल. तो जजमेंट देंगे, दैट जजमेंट शुड बी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. इसलिए आंखों पे वो काली पट्टी हो सकती है ताकि किसी को देख ना सके, लड़का है, लड़की है, विमेन है, रिच है, पुअर है, वो सारे साइड में रखने हैं. और दे शुड, एंड द जजेस शुड ट्रीट एवरीवन इक्वली. समझ में आया? वो काली पट्टी का मतलब ये होता है दैट देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, देयर शुड नॉट बी एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ सम पीपल. गॉट इट? ठीक है, फाइन. ऑब्वियसली होता है, क्यों नहीं होता है? क्या जजेस क्या डिस्क्रिमिनेट करते हैं क्या? कोई दलित ने पिटिशन फाइल किया तो उसका डिसमिस कर देते हैं, और ब्राह्मण ने किया तो उसका सुनते हैं, ऐसा कुछ है क्या जजेस? नो. मतलब अच्छा, आप कह रहे हो कि प्रैक्टिकली, जैसे अगर कोई इंटरव्यू में गए हैं, इंटरव्यू में कोई रिलेटिव है, हाँ, फिर क्या? फिर एक मिनट रुको, हाँ बोलो. क्या रिलीजन को लेके? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. अगर जजेस अपना डिसीजन किसी व्यक्ति के रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर दे रहा है, देन दैट जज डिजर्व्स टू बी इम्पीच्ड, और दैट जज डिजर्व टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द कोर्ट. ठीक है? बिकॉज जजेस क्या है? जजेस शुड इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. And what is the constitution guarantees equality before law. So how can judges discriminate? अगर प्रैक्टिस में कर रहे हैं तो they are violating the Article 14 of the Indian Constitution. And people will lose faith in the judiciary. Will you trust the judiciary which is biased in favor of government or some particular people belonging to a particular religion? No. Entire democracy will collapse. People will protest and people will revolt against the government. That is what happened in French Revolution. Louis XVI, he did not care about the welfare of the people. Did he care? No. He was living extravagant life. What happened? He and his wife were publicly executed, publicly guillotined. समझे? ठीक है? तो ये होता है. चलो, तो अपनी मनमानी नहीं करनी है. क्यों अपनी मनमानी नहीं करनी है? जजेस के पास पावर है, मतलब अपनी मनमानी करेंगे क्या? नहीं. क्यों? जजेस हो, प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, नो वन इज अबाउ द लॉ. लॉ इज सुप्रीम, लॉ इज मास्टर, ऑल ऑफ अस आर सर्वेंट्स. आप लोग सिविल सर्विसेज में जाओगे, ये भूलना मत कभी भी. नाम क्या है? सिविल सर्वेंट. बिहेव कैसे करते हैं? मास्टर्स की तरह. जिरेबैन का चश्मा पहनेंगे, हाँ, किसी को भी थप्पड़ मार देंगे, किसी को पीटेंगे, है ना. वो त्रिपुरा में किसी IAS ऑफिसर ने थप्पड़ मारा था ब्राह्मण को. दैट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14. मिसयूज ऑफ पावर है वो. तो हमेशा माइंड में अपने इम्बाइब करना कि आप किसके लिए एग्जाम दे रहे हो? नौकर बनने के लिए, नौकरशाह बनने के लिए. और आपका मास्टर कौन होगा? मास्टर कौन होगा आपका? कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन आपका मास्टर होगा. आप सारे सर्वेंट्स, मैं भी सर्वेंट हूं. किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का. कॉन्स्टिट्यूशन इज माय मास्टर. सो आई शुड परफॉर्म माय फंक्शंस, राइट? आई शुड एक्सरसाइज माय पावर and perform my duties considering the constitution, because it is the constitution which is the supreme and fundamental law of the land. कभी भूलना मत ये चीज.
और ये इक्वलिटी बिफोर लॉ भी कभी भूलना मत कि आप कितने भी पावरफुल हो जाओ, आपके ऊपर एक मास्टर बैठा हुआ है, वो है लॉ, और सुप्रीम लॉ कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है। यू शुड नेवर, है ना, कभी कभी हम में वो अहंकार आ जाता है कि हम तो यार कलेक्टर बन गए, आईएएस बन गए, डिप्टी सेक्रेटरी बन गए, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? नहीं। अगर कुछ भी करोगे तो क्या, तिहाड़ जेल में जाओगे, है ना। द few days back the Lalu Prasad Yadav was again convicted for चारा घोटाला, फॉर्डर स्कैम, और जो भी वो ब्यूरोक्रेट्स थे वो भी कन्विक्ट हो गए, जेल में है वो, बेल में छूट जाए तो बात अलग है। लेकिन समझो इस बात को, अगर आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिसीजन आप अपनी मनमानी करोगे, अपने हिसाब से डिसीजन लोगे, नहीं। यू हैव टू फॉलो सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है एडमिशंस के, है या नहीं है? या फिर हम लोग अपने बच्चे और रिलेटिव्स को कैसे भी विदाउट एनी कट ऑफ उनको एडमिशन लेते हैं, ऐसा कुछ है क्या? एक रूल्स और रेगुलर, अगर ऐसा करेंगे तो कंप्लेंट होगा, फाइल होगा, और हम लोग डिसमिस हो जाएंगे, हम लोग को रिमूव किया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा, पनिशमेंट दी जाएगी, है या ना? तो हमेशा ये चीज याद रखो, हाँ, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो कभी भूलना मत ये कि, और ऑलवेज रिमेंबर, पावर नेवर बिलोंग्स टू एन इंडिविजुअल। पावर नेवर बिलोंग्स टू एन इंडिविजुअल, power always belongs to the office which that individual holds। तो मोदी जी पावरफुल है, इंडिविजुअली पावरफुल नहीं है वो पावरफुल क्यों है? बिकॉज उनका जो ऑफिस है प्राइम मिनिस्टर का, वो पावरफुल है, समझे? तो कभी भूलना मत कि आप पावरफुल नहीं होंगे कभी, आप पावरफुल नहीं हो। आप पावरफुल क्यों बनेंगे? क्योंकि आपके ऑफिस, आपका जो ऑफिस है वो पावरफुल है। किसने बनाया है? संविधान ने बनाया है, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हो आप, समझे? क्लियर करो ये चीज, ठीक है, राइट। हाँ, अब ये कहोगे सर ऐसा तो प्रैक्टिकली होता नहीं है, तो ये अन्याय है समाज में, ये है वो है, ठीक है। सो ऑब्वियसली दैट इज वायलेशन ऑफ ऑल दिस प्रिंसिपल्स। जो समाज में हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है या ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, समटाइम्स वी शुड अंडरस्टैंड द वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। और इंडिया में वैल्यूज और प्रिंसिपल्स का डिक्लाइन हुआ है, तभी जाके तो करप्शन लेवल इतना हाई है, तभी तो करप्शन इज एक्सेप्टेबल। हाँ, हम लोग करप्शन को एक्सेप्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट्स ही नहीं क्लियर है, हमें पता ही नहीं है चीजें। हाँ, कभी भी कोई एक्सीडेंट कर देता है, किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, बच्चा इसके आ गया, किसी नीचे आ गया, किसी वो ड्राइवर को पकड़ के मर्डर कर देते हैं, उसका लिंच कर देते हैं। Is it allowed? Is it against the law? Obviously it is against the law. ऐसा नहीं कर सकते हो आप, लेकिन लोग करते क्यों? क्योंकि लोगों के पास दिमाग नहीं है, और लोगों ने ना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है ना लॉ पढ़ा है। And that is why I always say the constitution should be taught compulsorily during graduation across all the streams। अब क्या होता है, आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन कब तक पढ़ते हो? 10th तक। 11th और 12th में अगर साइंस ले लिया तो 10th तक ही आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा। 10th में आपका दिमाग उतना, आपका दिमाग मैच्योर नहीं होता है। फिर आप 11th 12th में साइंस पढ़ते हो, उसके बाद इंजीनियरिंग कर लिया, मेडिकल कर लिया, फार्मेसी कर लिया, इधर कर लिया, वो कर लिया, उसके बाद में आपका कॉन्स्टिट्यूशन कभी पढ़ते ही नहीं हो। और इसीलिए ये सारा लिंचिंग, हाँ, ये सूली पे चढ़वा दो इसको, इसका जेनिटल्स काट दो। हाँ, अच्छा किया वो क्या सत्येंद्र दुबे को मार दिया, क्या नाम है उस सत्येंद्र दुबे ने, क्या नाम था वो, यूपी का गुंडा, राइट? दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर हार्डन्ड क्रिमिनल भी होगा ना, फिर भी उसको आप पनिश नहीं कर सकते हो बाय टेकिंग लॉ इन योर हैंड, बिकॉज देयर इज अ सिस्टम इन प्लेस। You have to follow that system. Yes, I understand that the system is not working properly. The system is painstakingly slow. बहुत स्लो है, सालों लग जाते हैं पनिशमेंट दिलाने में, और ये लोग क्या है, वो लोग बेल लेके ये लोग घूमते हैं, दे रोम फ्री। Yes, so we can say that our criminal justice administration has a lot of weaknesses. So we should work to make the criminal justice administration foolproof. और वी शुड ट्राई टू इंप्रूव दैट, बट यू कैनॉट से कि क्रिमिनल जस्टिस गई भाड़ में, जो भी क्रिमिनल रेप करेगा उसको
तो यार तो फ्यूडल फ्यूडल टाइम पे भी तो यही तो होता था, एंशियंट और मिडिवल टाइम्स में यही होता था, और हमने ये प्रैक्टिस कर चुके हैं, और हमें ये पता है, हमें द हिस्ट्री ऑफ द सिविलाइजेशन सेज दैट दिस नेवर वर्क्स. पब्लिकली हैंगिंग पीपल, यू नो, पब्लिकली एग्जीक्यूटिंग पीपल नेवर वर्क्स. इसीलिए तो ये रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी फॉर लॉ, ये डेमोक्रेसी, ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुए हैं, समझे? हाँ, राइट. एंड दैट इज व्हाई वी यूज जंगल राज एंड ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, तो अपने गुस्से को काबू, यू हैव टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम कॉमन पीपल. कॉमन मैन हो क्या आप लोग? कॉमन पीपल हो क्या? कॉमन पीपल हो, लेकिन उसके साथ साथ आप तैयारी कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हो, आप लॉ पढ़े हो, तो योर ओपिनियन शुड बी डिफरेंट दैन द अदर्स, एंड योर ओपिनियन शुड बी इन कंसोनेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. समझे? अदरवाइज ये सारे पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं है. हाँ, ये सिर्फ थियरी में, किताबों में मत रखो. ये इक्वालिटी फॉर लॉ, 3 प्रिंसिपल रट्टा मार लिया, एग्जाम में लिख दिया. अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स इन योर रियल लाइफ. तभी तो एजुकेशन का मतलब है. एजुकेशन का मतलब क्या आपको आईएएस में सिलेक्ट करना है, क्या एम्प्लॉयमेंट देना है, जॉब देना है? नहीं. द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज टू इम्बाइब विजडम विद इन यू, इम्बाइब डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स डीपली इन योर माइंड. वो पर्पज है ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का पर्पज यही है. ठीक है, चलो. सो इक्वलिटी बिफोर लॉ इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट. ठीक है, एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, or this concept is of English origin. Okay, so we have borrowed this equality before law from Constitution of UK. So this concept of equality before law first originated in England. So they colonized us, and in theory they introduced the concept of equality before law, but in practice in reality they did not practice it. What was Rowlatt Act? Arrest without warrant, detention without warrant, violation of the principle of rule of law, of which the equality before law is one element. समझ में आया? चलो, ये हो गया equality before law, समझ में आया equality before law. Now second, what is the second? Equal protection of the laws. अब before we understand what is equal protection of laws, we need to understand what equal protection of laws does not mean. ठीक है, ठीक है. हाँ, क्या बोलते हैं? बोलते नहीं है, डिराइव किए गए. बोलना मिलना क्या होता है? यूज योर लैंग्वेज प्रॉपर्ली. हाँ, यही तो है, आप मैकेनिकली पढ़ते हो, 14 यहां से उठा, ऐसा नहीं है. इन जनरल द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिराइव्ड इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. इन जनरल, कि कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स होने चाहिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है. अब उसमें एक दो राइट्स है जो हमने कहीं और से बोरो किया, तो इट्स ओके, नथिंग रॉन्ग इन दैट. इन जनरल कह रहा हूं. और यूके कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? ठीक है, तो ऐसा मत देखो. नाउ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं होता कि इक्वल एप्लीकेशन और यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ लॉज टू ऑल द पीपल. ये नहीं है. व्हाट? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ डज नॉट मीन that law should be uniformly applicable to all. Equal protection of law does not mean universal or uniform application of law of the laws. ठीक है, इट डज नॉट मीन. ठीक है, ऐसा ये नहीं कि एक लॉ बना दिया आपने और वो सारे लोगों के लिए यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल कर दिया. इक्वालिटी फॉर लॉ, सॉरी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ डज नॉट मीन यूनिफॉर्म और आइडेंटिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉज टू ऑल द पीपल. ये नहीं होता है. देन व्हाट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? देन मीन्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, डोंट राइट डाउन, जस्ट रिमेंबर. ठीक है, जस्ट ध्यान दो, ये कॉन्सेप्ट है.
तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज मीन्स equality of treatment to those who are under equal circumstances or those who are similarly placed. That is what equality before law means. Equality before law मतलब ये नहीं होता है कि एक लॉ आप यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल करोगे, सबके लिए एक लॉ, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, है ना, राइट? ठीक है. सो इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर equal circumstances. Those people who are under equal circumstances, the law should be equally applicable. And those who are under different circumstances or unequal circumstances, the law should be different for them. You cannot uniformly apply. There cannot be uniform or universal application of the laws to all without any distinction. That is not equal protection of law means. समझ में आया? So equal protection of law means similar laws should be applicable to those who are similarly situated. Let me give you an example. ठीक है? Now 3 persons, ठीक है, they participate in racing competition, running competition. ठीक है, आपको रनिंग कंपटीशन में आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, यू आर एन ऑर्गेनाइजर, आप रनिंग कंपटीशन के रूल्स बनाते हो, दैट यू नो दिस इज द स्टार्टिंग लाइन, दिस इज द फिनिशिंग लाइन, एंड यू हैव टू रन 100 meters. The one who crosses this finishing line, first pass the post, मतलब क्या, this the person who first pass this post will be declared as winner. ठीक है, right? Now what you do, now there are 3 participants, ठीक है, one is well-bodied person, ठीक है, second is blind person, cannot see, visually impaired, let's not use the word blind, let us use visually impaired, VH, ठीक है, राइट? तीसरा है व्हीलचेयर बाउंड पर्सन, फोर्थ है पुअर malnourished women who does not have shoes. If all of them they participate, or all of them they start from the same line, who will win? Whose chances of winning are more? Well-bodied person. So are you applying equal protection of laws to them? No. You are treating them equally. तुम अंधे हो, तुम ब्लाइंड हो, विजुअली इंपेयर्ड हो, डिफरेंटली एबल्ड हो, सब यही से शुरू करेंगे और सब यही खत्म करेंगे. इज इट जस्टिस? नो. सो व्हाट यू विल डू, आप क्या करोगे कंपटीशन में, आप क्या करोगे, आप वेल बॉडीड पर्संस के लिए अलग रूल्स बनाएंगे, हाँ, फिर विजुअली इंपेयर्ड के लिए अलग कंपटीशन रखेंगे. सो यू विल क्लासिफाई द इंडिविजुअल्स into different categories and then you will frame the rules, and within that categories the rules will be same. ठीक है, वेल बॉडीड की आपने कैटेगरी बना दी, ठीक है, तो उसमें सारे लोगों के लिए सेम लॉज होंगे, उसमें कोई डिफरेंट लॉज नहीं होंगे. वीएच के लिए कैटेगरी बना दी, उसके लिए सेम लॉज होंगे, एंड so on and so forth. This is called as equal protection of law. Got it? यहां पे क्या हो रहा है, you are not treating this participant on the basis of their circumstances or on the basis of their situation. Are these people similarly situated in our example? Has the circumstances of each of them are similar? No. कोई well bodied है, कोई visually impaired है, उन दोनों के circumstances अलग है ना, तो क्या रूल सेम, आप लॉ सेम अप्लाई करोगे दोनों को, और अगर करोगे तो क्या होगा, इनजस्टिस होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा, ऑपरेशन होगा. समझ में आ रहा है? ठीक है, राइट? सो
दैट इज व्हाट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब ये नहीं है यूनिफॉर्म और यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ लॉज. पार्टिसिपेंट कोई भी हो, स्टार्ट यहां से करेगा, एंड यहां से करेगा, सबको सेम रूल्स. क्या ये होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? नहीं. समझे? सो व्हाट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मीन्स नंबर 1, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है? It means equality of treatment. Equality of treatment under, yes, under equal circumstances. Circumstances of an individual means socio-economic background of individuals may be same, but it may not be same. ठीक है, right? इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस. तो अगर आप विजुअली इंपेयर्ड हो तो सारे विजुअली इंपेयर्ड के लिए इक्वल ट्रीटमेंट होगा, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. ठीक है, लेकिन वेल बॉडीड पर्सन और विजुअली इंपेयर्ड पर्सन ये दोनों अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस है क्या? नहीं. ठीक है, सो इफ यू अप्लाई वन लॉ सिमिलरली टू द बोथ, डोंट यू वायलेट द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? यस, यू आर वायलेटिंग दिस. ठीक है, so equality of treatment under equal circumstances, right, for both in privileges as well as privileges conferred or any other thing, both in terms of rights given or in terms of duties. ठीक है, equality of treatment under equal circumstances. ठीक है, in both privileges conferred और liabilities enforced. ठीक है, दोनों इसमें प्रिविलेजेस या लायबिलिटीज दोनों अगर आपको अलॉट करने हैं, दैट शुड बी बेस्ड ऑन दोज हु आर अंडर इक्वल सर्कम, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस. समझ में आया? सेकेंड, सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज, similar application of the same laws to all the persons, to all the persons who are what? Who are similarly situated. Similar application of the same laws to all the persons who are similarly situated. ठीक है, who have similar socio-economic background, who have similar circumstances. Both these 2 points are interrelated to each other. समझे? And third and the most important, ये point बताने के बाद you will understand the entire concept of equality before law. ठीक है, and that is equals should be treated equally, and unequals unequally. This is the most important element of equality before law. Those who are under equal circumstances, those who are similarly situated, those who are under similar situations, means those who are equals, they should be treated equally. Among the equals, there cannot be any discrimination. The law should be uniformly applicable amongst equals. But can you treat unequals? Can you treat unequals and equals similarly? Can you treat well-bodied person and visually impaired person similarly? Why? Because both of them are not equals. So all the well-bodied person should be treated equally. Equals, because all of them are equals. Equals should be treated equally, and unequals unequally.
if you treat equals and unequals similarly, then there will be injustice. डिफरेंटली एबल्ड लोग के लिए भी एक ही रूल, हाँ, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए भी एक ही रूल, और एक ही रेस में आप सबको बोल रहे हैं आप दौड़ो. Will there be any meaning of will we have a genuine winner in this competition? नहीं. इस एग्जाम्पल में क्या किया हमने इक्वल्स और अनइक्वल्स को सेम ट्रीट किया, और इसके वजह से विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के साथ अन्याय होगा, ठीक है, एंड द व्हील चेयर बाउंड के अगेंस्ट भी अन्याय होगा, जिसके पास शूज़ नहीं है, जो ट्रेनिंग का पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हाँ, उसके पास रनिंग के जो क्लोथ्स नहीं हैं, अन्याय होगा. बहुत सारे लोग तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे. समझे कि नहीं समझे आप? अंडरस्टैंड दिस, ठीक है. सो नाउ दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज डिराइव्ड फ्रॉम द Aristotle's views on justice. Aristotle was ardent advocate of distributive justice. एरिस्टोटल ने बोला कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होना चाहिए, तो एरिस्टोटल ने कहा लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक. लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक मीन्स इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली. ठीक है, राइट. इफ यू ट्रीट इक्वल्स एंड अनइक्वल्स सिमिलरली देन देयर विल बी इनजस्टिस. एक पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, उसके 4 जनरेशन्स पढ़े लिखे हैं, अमीर है, पैसा बहुत है, ठीक है, राइट. 12th स्टैंडर्ड में उसने कोचिंग इंस्टीट्यूट लगाई, उसके घर में कोई पर्टिकुलर टीचर आता था पढ़ाने के लिए, उसके पास एक्सपेंसिव बुक्स खरीद सकते थे, ठीक है, बहुत सा इंटरनेट कनेक्शन है घर में. ए पर्सन है, पर्सन ए, और पर्सन बी, ठीक है, गरीब व्यक्ति है, गांव में रहने वाला, उसके गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. फॉरगेट अबाउट इंटरनेट, उसके घर में टीवी भी नहीं है, और वो बेयरली बुक्स को खरीद पाता है. ठीक है, राइट. ये दोनों 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम में 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम देते हैं. दोनों का रिजल्ट आता है. Obviously, who will perform better? Who has better chances of performing? Who has better chances of performing well in 12th standard? Person A. Now, person A suppose gets 90%, and suppose person B gets 70%. Will you have same cutoff to A and B? क्या दोनों के लिए आप सेम कट ऑफ रखोगे? और अगर रखोगे अन्याय होगा? होगा ही नहीं होगा, क्योंकि A and B are not similarly situated. A and B are not under equal circumstances. So can you treat them equally? No, you cannot. So you need to give some concession, some benefit, to B. Why? Because they are not equally situated. And that is what is the logic of affirmative action. That is what is the basis of affirmative action. Reservation is a part of is one of the affirmative actions. So equality, equal protection of law is the basis of affirmative action. ठीक है, it is the basis of affirmative action, है ना? Now, why affirmative action is required, like reservation, fee concession? Why? Can you say that the women and men are similarly situated in India? No. So can you have same cutoff for men and women? And if you have, there will be injustice. So should we give some concession to women in case of admission, in case of fees? है ना? इसीलिए यूपीएससी में women को फीस होती है क्या? नहीं. तो आप कहते हो कि दिस इज अ वायलेशन ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, कहोगे आप ऐसे? बिकॉज मेन एंड women, India is a patriarchal society. Women and men are not similarly situated. Women have to face so many struggles.
समझ में आया कि नहीं आया? So that is why there is some concession in terms of marks, percentages, so on and so forth, and that is what is the basis of affirmative action, right? What is the purpose of affirmative action? The purpose of affirmative action is to provide what is called as level playing field. Level playing field to all. ठीक है, तो हम जब रिजर्वेशन देते हैं SC, ST, OBCs को, what we are trying to do, right? The upper caste sections are here and the lower caste section of society, they are here. Now why we need reservation, why we need affirmative action? In order to bring the SC, STs, OBCs, minorities, women at a level similar to the upper caste men, so that they can compete as equals, so that there is fair competition. ये वाला competition fair था क्या A और B का? 90% and 70% fair competition था क्या? नहीं. So equal protection of law ensures level playing field. Equal protection of law is the basis of affirmative action. And since Indian Constitution guarantees equal protection of law, it is the duty of the state to provide affirmative actions and to provide various facilities and opportunities to weaker and vulnerable sections of society. समझ में आया? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ में क्या कॉन्सेप्ट, क्या डिफरेंस है या क्या मीनिंग है? ठीक है, राइट? सो द अफर्मेटिव, सो when equals and unequals are treated differently, it is not violation of Article 14. ठीक है? सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब ये नहीं कि एक लॉ सबको समान एप्लीकेबल होना चाहिए. आप बोलोगे नहीं सर, एक ही लॉ, सबका कट ऑफ एक ही होना चाहिए. सर हमने तो मेहनत की, हमको एडमिशन नहीं मिल रहा है और जो रिजर्वेशन का फायदा उठा के लोग जा रहे हैं. विल यू आर्ग्यू दैट? नो, आपके और उनके सर्कमस्टेंसेस अलग अलग है. सो यू कैन नॉट टॉक against the reservation, abolition of, you can say that the reservation system needs reform. Definitely you can argue that no system is foolproof, but can you say that reservation system should be removed, should be eliminated? Can you argue? Now you cannot, because we have seen what equal protection of law means, है ना? अब रिजर्वेशन सिस्टम का क्या मतलब होता है कि ये जो SC, ST, OBCs है उनको एक समान लेवल पे लेके आए. जिस दिन वो समान लेवल पे आएंगे उस दिन we will not need reservation. And that is why that Dr. B.R. Ambedkar, he himself said that when there will be no discrimination in the society on the basis of caste, or when the SC, STs and ST, STs, particularly Dalits or the weaker section of society will come at the level with the upper caste section of society, I will be the first one to remove the reservation system. That is what he said. So can you say कि आज जो है सारे लोग एक लेवल प्लेइंग फील्ड आ गया है इंडिया में? आप कह सकते हो क्या? क्या इंडिया में सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है? समान सबके लिए अवसर है क्या सबके लिए? नहीं है. एंड दैट इज व्हाई वी नीड अफर्मेटिव एक्शन, दैट इज व्हाई वी नीड रिजर्वेशन, दैट इज व्हाई वी नीड फी कंसेशंस, दैट इज व्हाई वी नीड स्कॉलरशिप्स. समझ में आया? और इसका बेसिस किस में है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में है. हम लोग क्या करते हैं? हम ब्राह्मण हैं तो हम रिजर्वेशन के अगेंस्ट बोलेंगे, हम दलित तो रिजर्वेशन के फेवर में बोलेंगे. No, keep all these things aside and think rationally and logically. And keep the Constitution of India in your mind. And you will get the answer. Okay? So, equal protection of laws means equals should be treated equally and unequals should be treated unequally. Okay? So, it means, and Supreme Court, in fact, it has said that when equals and unequals are treated differently, then Article 14 does not come into picture. You cannot say that, oh, Article 14 talks about equality before law. हाँ, सबके लिए समान कानून होना चाहिए, इनके लिए रिजर्वेशन, इनके लिए अलग कानून क्यों है, हमारे लिए अलग कानून क्यों है? It is allowed. Equal protection of laws. ठीक है, right? Equal protection of law precisely means treating equals equally and unequals unequally.
equality of treatment under equal circumstances, equal application of the same laws to all the persons who are similarly situated. Let me give you another example of taxation. Direct tax. We have what is called as progressive taxation. तो अलग अलग टैक्सेशन के स्लैब्स है. क्या टैक्स रेट सबके लिए, सब जो अर्निंग मेंबर्स है, क्या सबके लिए सेम टैक्स पे करना पड़ता है? नहीं ना. सो वी हैव टैक्स स्लैब्स. फॉर एग्जांपल फ्रॉम 0 to 5 लाख जिनका इनकम है उनको क्या टैक्स है? उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता है. ठीक है. फिर एक है 5 to 7.5 लाख, है ना. अलग अलग कैटेगरीज है, 5% एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. तो क्या आप, ये क्या है? इट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ. क्या आप ये कह सकते हो कि 0 to 5%, 0 to 5 लाख वाले तो टैक्स नहीं पे कर रहे, अगर टैक्स पे करना है तो सब लोगों ने समान पे करना है? कैन यू आर्ग्यू दैट? नो. सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ डज नॉट मीन यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ लॉ टू ऑल पर्संस. ठीक है. सो जिसका जितना इनकम है उसके हिसाब से उतना उसको टैक्स देना पड़ेगा. तो क्या होता है इक्वल? इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? वी आर क्लासिफाइंग, वी आर डिवाइडिंग द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्कमस्टेंसेस हम डिवाइड कर रहे हैं. और उसके बाद में ये 0 to 5 लाख में जो भी आ रहे हैं उनको हम सिमिलर ट्रीटमेंट कर रहे हैं. उनके लिए हम अलग लॉ नहीं लेके आ रहे हैं. ठीक है. और 5 से 7.5 लाख के बीच में जितने भी लोग हैं उनके लिए कोई सब कैटेगराइजेशन नहीं है, वो उनको हम सेम ट्रीट कर रहे हैं. लेकिन क्या हम 0 और 5 लाख जिनका इनकम है और जिनका इनकम 5 और 7.5 से 7.5 लाख के बीच में है, क्या हम दोनों को सेम ट्रीट कर रहे हैं? नहीं. और अगर सेम ट्रीट करेंगे तो इट्स अ वायलेशन ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ. समझ में आया? ठीक है. सो दैट इज व्हाई वी हैव प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. कैन यू से दैट रिच एंड पुअर शुड पे इक्वल टैक्सेस? डायरेक्ट टैक्सेस आई एम टॉकिंग अबाउट. नहीं ना. That is why direct taxes are progressive in nature, whereas indirect taxes are regressive in nature. क्यों? बिस्किट खरीद लिया, उसमें टैक्सेस लगे हुए होते. गरीब खरीदेगा उसको भी उतना ही टैक्स देना पड़ेगा, अमीर खरीदेगा उसको भी उतना ही टैक्स देना पड़ेगा. इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव बट द डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव इन नेचर. जितना आपका इनकम है उतना आप ज्यादा टैक्स दोगे. 15 लाख के ऊपर है 30% टैक्स दो. तो क्या 15 लाख वाले ये बोलेंगे कि 0 to 5 लाख वाले तो कुछ भी नहीं दे रहे हैं, हमें 30% क्यों, बाकी लोग को 25 और 20% क्यों? क्या वो कह सकते हैं? नहीं कहेंगे. क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली. दैट इज व्हाट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मीन्स. क्लियर? अब आया समझ में? हाँ, एग्जाम्पल के साथ आपको आई थिंक समझ में आया होगा. ठीक है. So reservation, affirmative action. Reservation is one of the affirmative action. ठीक है. Positive discrimination, progressive taxation. All these basic purpose of all these initiatives or all these things is to ensure equality before law. Sorry, is to ensure equal protection of law. Treating equals equally and unequals unequally. है ना. आपने एक देखा होगा कि आपने एक पिक्चर देखा हो ना कि 3 स्टूडेंट्स है. ठीक है. ये इसका हाइट ये है. ठीक है. अब ये इसको आदमी मान लो या वुमेन मान लो. ठीक है. एक यहाँ पे है. ठीक है. ठीक है. और एक इधर है. ठीक है. ये तीनों क्रिकेट मैच देखने जाते हैं. ठीक है. अब ये बाउंड्री है या वॉल है. ठीक है. अब ये जो पर्सन है ये मैच अब इन्होंने तीनों ने टिकट निकाले. बाउंड्री क्या है? यहाँ पे है. राइट. अब ये मैच को देख पा रहा है लेकिन ये दोनों नहीं देख पा रहे. क्यों? इनकी हाइट कम है. तो आप क्या करोगे? इसको क्या करोगे? आप इसको एक प्लैंक दोगे जिसके ऊपर ये खड़ा रह के मैच देख सके. तो ये एक लेवल पे आ गया. इसको आप 2 प्लैंक दोगे, इसकी हाइट और भी कम है, तो ताकि ये तीनों एक लेवल पे आ जाए और तीनों मैच को एंजॉय कर पाए. दिस इज कॉल्ड एज इक्वालिटी बिफोर लॉ. सॉरी, इट इज कॉल्ड एज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. समझ में आया? आपने ये जो एक प्लैंक इसको दिया है बी को ABC और ये 2 प्लैंक सी को दिया है, इट मीन्स यू आर इंश्योरिंग इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस. अगर ये तीनों को हम एक ही टिकट और एक ही समान हम ट्रीट करेंगे तो इट विल बी इनजस्टिस. अब क्लियर है? वेरी गुड. चलो, नाउ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
has said that Article 14 prohibits class legislation. Class legislation. Okay? There cannot be any class. Class legislation means one law cannot be uniformly applicable across class. Class is a heterogeneous category. ठीक है? Class में अलग एक rich class हो सकते हैं, upper class, middle class, lower middle class. So can you apply one law to the entire class? No. So the class legislation is not allowed under Article 14. It is prohibited. And if there is any class legislation, it will be violative of Article 14. It cannot be implemented. It will be declared as unconstitutional. ठीक है? Right? But reasonable classification. Reasonable classification of persons is allowed. Yes? Reasonable classification of persons is allowed. Yes? Classification amongst the individuals is allowed provided such classification is reasonable and it is not arbitrary, absolute or evasive. Now let me give you another example. OBC reservation. So now OBC reservation. Reasonable classification is allowed. Now OBCs में क्या सबको 27% सारे OBCs को 27% रिजर्वेशन है क्या? नहीं. तो अगर आप सारे OBCs को 27% लागू करें इसका मतलब you are using class legislation. You are applying one law to the entire class, OBC as a class. Is it allowed? No. ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि OBC is a heterogeneous category. Within OBC we will have a reasonable classification. ठीक है? Now Supreme Court did this classification on the basis of what is called as creamy layer. Creamy layer and non-creamy layer. और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? This 27% reservation in government jobs and education institutions will be allowed or will be applicable only to non-creamy layer OBCs, and creamy layer among the OBCs they will not enjoy the benefits of reservation. This is called as reasonable classification. Yes, ठीक है? Because OBC is a heterogeneous category. Within OBCs there are some OBCs which are at a higher level of development, whereas others are still lagging behind. ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में 1992 इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992 में सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस द मंडल कमीशन द गवर्नमेंट्स डिसीजन वीपी सिंह गवर्नमेंट्स डिसीजन टू इम्प्लीमेंट the 27% reservation to OBCs was challenged as unconstitutional under right to equality. Article 14. What did Supreme Court said? Supreme Court upheld the 27% reservation to OBCs, but with conditions. There were so many conditions. One of the most important conditions was dividing the OBCs into creamy layer and non-creamy layers. Then it also said that it also laid down the Lakshman Rekha of 50%. That unless in exceptional circumstances, the total reservation cannot exceed 50%. This I am going to discuss in the next class. But ये समझ में आया? तो आप क्या कर रहे हो? You are treating equals equally and unequals unequally. क्या आप क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर जो ओबीसीज है क्या उन दोनों को आप समान ट्रीट कर रहे हो? नहीं. अगर करोगे तो क्या होगा? इनजस्टिस होगा. इवन दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विल गेट द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन जब उनको जरूरत नहीं है उसकी. समझे? सो रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज अलाउड. ठीक है? Provided that classification is reasonable, it is not arbitrary, absolute or evasive. That is what Supreme Court has ruled. समझ में आया? ठीक है? So affirmative action, reservation, OBC creamy layer, non-creamy layer, taxation system, these are all the examples of ensuring equal protection of laws. Clear? ठीक है, very good. Now
देखिए, I told you that equality before law is negative concept. What about equal protection of law? Is it a negative concept or a positive concept? Equal protection of law negative है या positive है? It is a positive concept. It enables the state to provide certain opportunities and facilities to the weaker section of society, right? ठीक है? So it is a positive concept. Equal protection of law is positive concept. Equality before law is negative concept. ठीक है? Right? And the equality before law, basically it is derived from the Constitution of USA. US Constitution. Equal protection of law, this principle is derived from US Constitution. What about equality before law? It is derived from UK Constitution. Huh? Right? This year there was a question in mains. Compare right to equality in US Constitution and Indian Constitution. ठीक है? Right? मैंने UPSC मेंस का इस बार का पेपर डिस्कस किया है. ठीक है? जनरल स्टडीज पेपर 2 आई हैव डिस्कस दैट. प्लीज वॉच दैट लेक्चर. इसमें मैंने आर्टिकल 14 को डिस्कस किया है. कंपैरिजन बिटवीन between US and Indian Constitution when it comes to right to equality. And those who are watching online, आप लोग भी वो UPSC मेंस जनरल स्टडीज पेपर 2 का डिस्कशन देख सकते हैं. 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है वो डिस्कशन. उसमें ये आर्टिकल 14 और कंपैरिजन बिटवीन US एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने डिस्कस किया है. ठीक है? राइट? ठीक है? सो लेट मी समराइज. Equality before law is somewhat negative concept and it is of English origin. ठीक है? Right? It means following things. Number 1, absence of any special privileges to any person. ठीक है? Second, equal subjection of all the persons to the ordinary laws administered by ordinary courts. And third, no person is above the law. ठीक है? Right? ठीक है? Second, equal protection of laws. Equal protection of laws means following. Number 1, equality of treatment under equal circumstances. Number 2, equal subjection of the same laws to all the persons who are similarly situated. And number 3, equals should be treated equally and unequals unequally. And equal protection of law is a positive concept and it is derived from the Constitution of USA. And the affirmative action, reservation system, division of OBCs into creamier, non-creamier, progressive taxation, these are all the examples of ensuring the mechanisms of ensuring equal protection of laws. Okay, fine. Now, yes, Article 14 guarantees equality, but it does not mean that there should be absolute equality. Can you achieve absolute equality in the society? Never. This absolute equality is possible only in communist society, wherein there is no classless and stateless society. State भी नहीं है, class भी नहीं है, no right to private property. Everything will be owned and controlled and managed collectively. उसमें absolute equality हो सकती है, लेकिन उसमें भी कुछ लोग ज़्यादा पावरफुल होंगे, कुछ लोग कम पावरफुल होंगे. ठीक है? सो absolute majority is impossible. Achieving absolute majority is impossible. ठीक है? Absolute equality. ठीक है? Absolute equality is impossible to achieve. It is utopian idea. There is bound to be some inequality in the society. But such why? Because different individuals have different skills, talents, abilities and capacities. ठीक है? So that is why there is bound to be some inequality, but we need to remove the inequality which is socially structured. Inequality due to caste,
रिलीजन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, उस इनइक्वालिटी को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं और उनको इरेडिकेट करना हमारा काम होना चाहिए। और वो कैसे करते हैं? रिजर्वेशन, अफर्मेटिव एक्शन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है, राइट। सो देयर कैन नॉट बी एब्सोल्यूट इक्वालिटी, इट इज इम्पॉसिबल आइडियल, ठीक है। सो इवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर, इट मीन्स दैट देयर आर सम एक्सेप्शंस टू इक्वालिटी, ठीक है। सो इवन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू इक्वालिटी। अच्छा, और एक चीज, आर्टिकल 14 guarantees similar treatment and not identical treatment. Similar treatment is based on circumstances. Identical treatment मतलब क्या? सबके लिए एक ही कानून. So Article 14 guarantees similarity of treatment and not identical treatment. ठीक है? So there are various exceptions to concept of equality in the Indian Constitution. ठीक है? Now, for example, Article 361. Article 361 basically provides for certain immunities. It provides certain immunities. To whom? To two people. President of India or governor or the state. There are exceptions. They are treated exceptionally. There are certain exceptions to the office of president and governor. They are provided under article. Which article? Article 361. Meaning there are certain immunities, certain exceptions given to the office of president and governor under article 361. What are they? ठीक है, I am not writing, ठीक है, listen to me carefully. President and governor, they are not responsible. President and governor are not responsible in any court of law for exercise of their power, for exercise of the power or performance of the duties relating to their office. So, while discharging their official duties, you cannot hold the president or governor responsible or answerable. कोर्ट में नहीं लेके जा सकते उनको आप कि आपने ये पावर ऐसा एक्सरसाइज किया. नो, ठीक है. प्रेसिडेंट एंड और गवर्नर इज नॉट आंसरेबल in any court of law for exercise of power or performance of duties relating to his office. Official duties, जो ड्यूटीज प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफिशियली करते हैं एज अ प्रेसिडेंट और अ गवर्नर, उनके लिए दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, आंसरेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ. दिस इज एक्सेप्शन, ठीक है, राइट. सेकेंड, नो criminal proceedings shall be instituted or continued against the president or governor in any court of law. No criminal proceedings shall be instituted or continued against the president or governor during their term of office. मतलब जब तक प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑफिस में है तब तक उनके खिलाफ आप कोई क्रिमिनल केसेस कोई भी कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस. इंटरेस्टिंग है. सोचो हाइपोथेटिकली प्रेसिडेंट है या गवर्नर है, चोरी करता है, मर्डर करता है ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस. कैन यू फाइल क्रिमिनल केस अगेंस्ट हिम? नो. तो क्या करे फिर? देयर इज अनदर ऑल्टरनेटिव, आर्टिकल 61, दैट इज इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट.
See, the office of president is bestowed with dignity and prestige and authority. So that is why the governor as well as president. The governor is head of the president of India is the head of the state. He is the first citizen of India. Governor is head of the state government, right? And he is also the first citizen of the state. So that is why they need some immunities. ठीक है, समझ में आया? No criminal proceedings shall be instituted or continued. प्रेसिडेंट या गवर्नर होने से पहले कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किए थे, चल रहे थे, पेंडिंग है, जैसे ही प्रेसिडेंट या गवर्नर बने दे विल नॉट बी कंटिन्यूड जब तक वो ऑफिस में है, जब तक उनका टेन्योर है, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ देयर ऑफिस. आई रिपीट, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड, इनिशिएटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट or governor in any court of law during the term of their office. Then no process of arrest, ध्यान सुनना, no process of arrest or imprisonment against the governor or the president shall be issued by any court of law during his term of office. No process of arrest or imprisonment shall be issued against the president or governor in any court of law during his term of office. His मतलब गवर्नर या प्रेसिडेंट, जब तक वो गवर्नर है या प्रेसिडेंट है उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ना इम्प्रिजनमेंट किया जा सकता. सो कोर्ट कैन नॉट ऑर्डर अरेस्टिंग और अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ गवर्नर और द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस. दिस इज इम्यूनिटी, दिस इज एक्सेप्शन अंडर आर्टिकल 361. समझे? नाउ नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड. ठीक है, बट व्हाट अबाउट सिविल प्रोसीडिंग्स? ठीक है, नाउ civil proceedings can be instituted against the president or the governor in any court of law during their term of office, but before that governor or president has to be given 2 months prior notice. अगर आपको सिविल केस फाइल करनी है, सिविल केस, डिवोर्स इज अ सिविल केस, राइट? मैरिज, अडॉप्शन, सिविल केस. ठीक है, तो आप प्रेसिडेंट या गवर्नर के खिलाफ सिविल केस ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस फाइल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, लेकिन उसके पहले आपको 2 months नोटिस हैज टू बी गिवन टू प्रेसिडेंट और गवर्नर एज द केस में भी. क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो आप फाइल ही नहीं कर सकते हो ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस, बट सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस, बट बिफोर दैट, केस फाइल करने से पहले आपको क्या करना है? यू हैव टू गिव 2 months प्रायर नोटिस टू द प्रेसिडेंट और गवर्नर बिफोर इनिशिएटिंग सिविल प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट. समझ में आया? हाँ, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कर सकते क्या? नहीं कर सकते. सिविल प्रोसीडिंग्स कर सकते, लेकिन 2 महीने का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा. ठीक है, सो दिस इज अबाउट आर्टिकल 361. ठीक है, सो नो सिविल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है, फॉर एनी कोर्ट ऑफ लॉ. और इसमें ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट एनी एक्ट डन बाय प्रेसिडेंट और गवर्नर इन देयर पर्सनल कैपेसिटी, नॉट एज अ प्रेसिडेंट और गवर्नर, बट इन द पर्सनल कैपेसिटी. ऑफिशियल कैपेसिटी में वो जो भी कुछ करते हैं उसके अगेंस्ट आप केस फाइल ही नहीं कर सकते, जो पहला देखा हमने. हाँ, गवर्नर्स और प्रेसिडेंट दे आर नॉट आंसरेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ with regard to exercise of their power, exercise of the power or discharge of the duties related to their office. लेकिन when it comes to any act done by the president or the governor in his or her personal capacity, ठीक है, before becoming president or governor or after becoming president or governor, it can be, the civil proceedings can be initiated, but for that 2 months prior notice can be done. ठीक है, तो any act done
in case of any act done by the president or governor in his individual capacity, in his personal capacity, before becoming president or governor or after becoming president or governor. ठीक है, in this case the civil proceedings can be instituted, but before that 2 months notice has to be given. समझ में आया? ये वाला जो सिविल प्रोसीडिंग जो है वो ऑफिशियल ड्यूटीज के बारे में नहीं, कर ही नहीं सकते ऑफिशियल ड्यूटीज के बारे में. किसके बारे में कर सकते? इन केस ऑफ द एक्ट डन बाय प्रेसिडेंट और गवर्नर इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, नॉट एज अ गवर्नर और अ प्रेसिडेंट. समझ में आया? दिस इज आर्टिकल 361. नाउ देयर इज वन आर्टिकल, देयर इज वन मोर आर्टिकल 361A. नो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड. No civil or criminal proceedings shall be instituted in any court of law for publication in a newspaper of a substantial true report of the proceedings of the parliament or the state legislature. मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं कोई ट्रू रिपोर्ट जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स का ट्रू रिपोर्ट में पब्लिश करता हूँ, और वो रिपोर्ट जो है वो क्रिटिकल है, वो एक्सपोज कर रहा है बहुत सारे वीकनेसेस. ठीक है, राइट. लेकिन वो रिपोर्ट सब्सटेंशियली ट्रू है, सही है, तो मैं एज अ जर्नलिस्ट मेरे अगेंस्ट सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं इनिशिएट किए जा सकते इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ. समझ में आया? दिस इंश्योर्स फ्रीडम ऑफ प्रेस. आर्टिकल 361A. नो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स shall be instituted in case of publication in any newspaper or radio or television of substantially true report of the proceedings of either house of the parliament or either house of the state legislature. समझ में? मैं एज अ जर्नलिस्ट, मैं जर्नलिस्ट हूँ या मैं एक किसी टीवी चैनल का ओनर हूँ, ठीक है, मैं जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स का ट्रू रिपोर्ट में पब्लिश कर रहा हूँ, लोगों को दिखा रहा हूँ, तो मेरे अगेंस्ट सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं लिए जा सकते. ठीक है, प्रोवाइडेड मेरा जो रिपोर्ट हो, अगर गलत रिपोर्ट पब्लिश कर रहा हूं, हाँ, विच ब्रीचेस द प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, तो फिर सिविल या क्रिमिनल केसेस फाइल किए जा सकते हैं. समझ में आया? ठीक है, राइट. देन देयर इज अनदर आर्टिकल. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज MLAs. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज गारंटेड अंडर आर्टिकल 105. 105 ध्यान से सुना करो, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं. ठीक है, and 194 when it comes to yes. ठीक है, 5:30 बजे तक क्लास था ना, मुझे सुदीप सर ने 5:30 फिनिश कर रहा हूं सर, है ना? ठीक है. सो आर्टिकल 105 states that no member of parliament shall be held responsible in any court of law for anything said or any vote given in any house of the parliament or any of its committees. ठीक है, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कुछ चीजें बोलता है या कोई वोट करता है तो उसके खिलाफ आप कोई भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं कर सकते. राइट. सो दिस इज अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गिवन टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट of both Lok Sabha and Rajya Sabha under Article 105 of the Indian Constitution. ठीक है, no member of parliament shall be liable to any proceedings in any court of law for anything said or any vote given in the parliament or any of its committees. And Article 194 grants similar freedom protection to MLAs. समझ में आया? Then the next exception to, these are all exceptions to equality. The next exception to equality is under Article 31C. Very important. Article 31C. ठीक है, Article 31C was added through 25th Constitutional Amendment Act 1971. ठीक है, मैंने बताया था Article 31C is about saving of laws giving effect to certain directive principles of state policy. That is what Article 31C is about. I have already taught you. Revise करो. Article 31C states that no law of the parliament or the state legislature which seeks to give effect to the directive principles of state policy
under Article 39B and 39C shall be declared as unconstitutional due to violation of fundamental rights guaranteed under Article 14 and 19. That is what Article 31C is about. 39B और 39C डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर जो लिखा हुआ है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अगर पार्लियामेंट कोई लॉ पास कर रहा है और उसके वजह से आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा है तो दैट लॉ विल नॉट बी डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड. समझे? दैट इज अलाउड. ठीक है, दैट इज व्हाट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 31C एंड दैट इज व्हाई सुप्रीम कोर्ट हैड सेड दैट whenever article 31C comes, article 14 goes. You cannot challenge that as violation of right to equality before law and equal protection of law under Article 14. Got it? So this is also an exception. Article 31C is also exception to right to equality under Article 14. Okay? Then there are some other exceptions as well. Quickly, the foreign rulers, the ambassadors, okay, the commissioners or diplomats, they enjoy diplomatic immunity. This is also exception to equality. Okay? Then United Nations officials, the officials of United Nations, they also enjoy diplomatic immunity under United Nations Privileges and Immunities Act 1947. This is also exception to equality. अगर कोई ambassador या अगर कोई फॉरेन डिप्लोमेट इंडिया में कुछ कोई गलत चीज करता है तो उसके लिए लॉ डिफरेंट है. समझे? दिस इज एक्सेप्शन टू इक्वालिटी. राइट? सो दीज आर द 7 एक्सेप्शंस टू राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. ठीक है? नाउ आई विल गिव यू वन होमवर्क. राइट डाउन अबाउट रूल ऑफ लॉ. व्हाट इज रूल ऑफ लॉ? What is the expression rule of law? I have already taught you. मैंने already आपको पढ़ाया है. A.V. Dicey, 1885, an introduction to the study of law of the Constitution. ठीक है? He says that the rule of law has 3 elements. Number 1, absence of arbitrary power. Number 2, equality before law. And number 3, predominance of legal spirit. Means presence of independent and impartial judiciary. These are the 3 elements of the expression rule of law as given by or as explained by A.V. Dicey. British jurist. A.V. Dicey कब? 1885 in his book An Introduction to the Study of Law of the Constitution, one of the finest book on law written ever. ठीक है? प्लीज इसको रिवाइज करना रूल ऑफ लॉ को. ठीक है? सो टुमारो आई विल डिस्कस विथ आई डिस्कस आर्टिकल 15. ठीक है? कोई क्वेश्चंस? नो? थैंक यू.